we are welcoming everybody who comes from across the nation. So we are a welcoming state. We have very large number of young population in Rajasthan, which through generations has proved its loyalty, its integrity, and its hard work. And our state, under the leadership of Bhajan Lal ji, we have two very clear policies. One is, it should be easy to do business in Rajasthan, and I'll give you examples for that as well. The second is, we must bring down the cost of doing business in Rajasthan. Very good morning to everybody here. Good morning to Honorable Minister. Thank you once again for taking your time out from your busy schedule. As my colleague Mr. Dobal pointed out, Rajasthan is kind of on a high. Let me add to this that last year's growth rate was 7.8%, which was much higher than India's national average growth rate. And the recovery that Rajasthan has achieved post-COVID has been phenomenal, in a sense that close to 8% growth rate on a trot in the last 4 years is something that no other state has achieved. And this has happened at a time when the share of agriculture in Rajasthan's total economy has come down, in a sense that it used to be 30%, today it is 26%. And the share of services is going up, and industry remain more or less the same at 28%. In this scenario, would you like to tell this audience and to Business Standard, what is it that is clicking and working right for Rajasthan's industrial growth, and how do you see it going forward in the days to come? Thank you so much, AK, and thank you for the lovely introduction, Mr. Dobal. I think what you spoke here, that's exactly what we want printed in your paper. But I must, before I answer your question specifically, AK, let me thank Business Standard, congratulate Business Standard, and also congratulate Rajasthan, because 50 years of giving news is not an easy task. And you completed that. And this is going to be your 7th edition for Hindi, the 14th edition for English. And the fact that you have chosen Rajasthan at this point of time for your Hindi and English speaks volumes for our business people who are sitting right here, probably hundreds of them watching, and the many numbers of youth who will be probably reading your newspaper. It is an honor and a privilege for Rajasthan that Business Standard has come here. Through you, our policies, through you, the needs of the businessmen, and through you, I'm sure in the next 3.5 years, we will reach 30 lakh crore with a 350 billion economy in Rajasthan. Now, AK, whether it is agri sector or services sector, Rajasthan is sitting on the tip of the iceberg. In a way, it's a blessing in disguise. Why I say a blessing in disguise is, development should have happened in Rajasthan many years ago. I'm frankly saying that. It hasn't happened. And therefore, there's a massive opportunity of doing it now. The geographical location of Rajasthan is so wonderful, and it's blessed by brilliant weather, that we are between Delhi and Mumbai. We have very large geographical area, which means large amounts of land. We have very large number of young population in Rajasthan, which through generations has proved its loyalty, its integrity, and its hard work. And so
नॉर्थ जोन का जो पूरा मार्केट है वो यहाँ से सर्विस हो सकता है। जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान और दिल्ली के जो युवा हैं, उनकी स्किल एजुकेशन वो सारी राजस्थान में हो सकती है। राजस्थान जितने भी प्रदेश हैं उन सबसे पीसफुल स्टेट है। हम रीजनलिज्म नहीं करते, यानी वी आर वेलकमिंग everybody who comes from across the nation. So we are a welcoming state. It is not only a state to do business in, it is a state to settle down in. So you can live here, you can work here, everything is perfect for Rajasthan. So that is why it requires leadership, it requires policies that actually are able to help businessmen and youth move forward. And that's exactly what we're doing, irrespective of sectors. Thank you very much. Economists talk about factor markets, and the factor markets, as you would very well know, is about land, labor, capital, and entrepreneurship. Now, you talked about land, you talked about labor, which is skilling, and it so happens that you're also a minister, and one of the departments that you look after is entrepreneurship. I will come to the capital part later, but as the minister in charge of entrepreneurship, and Rajasthan being a state that has produced entrepreneurs after entrepreneurs who have settled down in different parts of the country, how do you see entrepreneurship still fueling Rajasthan's growth going forward? So Rajasthan entrepreneurs are natural entrepreneurs. They are born entrepreneurs. I think this has happened because of generations and generations of their work and service. Also probably the way Rajasthan was placed and the direction from which the invaders were coming, this became a business hub, a trading hub for centuries. Now having said that, in the first year itself we did Rising Rajasthan, an event to invite investors into Rajasthan. And amongst those 3 days, this was the first time that we dedicated one full day for businessmen from Rajasthan. Because we truly believe that Rajasthanis have the potential and they should be the first investors to come back to Rajasthan, be it from other states or be it from other countries. There are a large number of Rajasthanis who are doing brilliant, very well in business. And so we dedicated one day, and we have policies which helps not just the non-resident Rajasthanis but everyone. So be it education, be it skill, be it trading, be it mining, be it logistics, be it hospitality, be it health sector, there are ample opportunities in Rajasthan which not just the non-resident Rajasthanis but anyone, because like I mentioned earlier, the doors of Rajasthan are open for everybody. In fact, I must tell you that this first Rising Rajasthan that we did was a global event, and we visited a large number of countries. A lot of countries were surprised that we have opportunities just not in one or two, but a dozen sectors. Wow. Many nations are not used to this fact. They have opportunities on 1, 2, max 3. So they were surprised that not a country, but a state within a country has opportunities in a dozen sectors. And so therefore, Rajasthan is now not just known for tourism, but also for the large number of opportunities that Rajasthan holds. Thank you. Thank you for this detailed response to that question. Let us put Rajasthan in a national context, and we keep talking about it, the national goal of $5 trillion economy, which we'll achieve most probably in a few years from now. As Rajasthan's minister as of commerce, industry, IT, communication, can you give us a broad, a kind of a blueprint for how you see Rajasthan taking its journey forward in the next few years? Any specific areas that we need to watch out for, and maybe for our readers, what kind of things Rajasthan is looking at? If you can give us an indication.
So since you mentioned about India moving in a certain direction, a 5 trillion economy very soon, and we also have a very strong leadership of our country in Prime Minister Modi. I must tell you that a leadership plays a very important role, be it a house, be it a, a small team, or be it the entire nation. And I must give you an example of that. If the national government decides on a certain direction, which is a 5 trillion economy, and it also believes in Atmanirbhar Bharat and starts working on that, then our own entrepreneurs within our country start getting a boost in terms of policies and various kinds of support. Not just that, we understand that there's better technology in some countries, but we are the largest market. Previous government felt being the largest market is a weakness, and we have to buy from someone or the other. We have to be serviced by other people. But the present Prime Minister and our government believes that the largest market is our strength. That's right. And therefore, the examples that I will give you now is EFTA, which is the free trade agreement with some of the European countries, where for the first time there's a binding commitment on the European nations to not only give us the technology, but invest $100 billion in the next 15 years by themselves. It's never been there ever in any of the free trade agreements. 50 billion in the first 10 years and 50 billion in the next 5 years. Similarly, we have energy treaty with the United Arab Emirates. We have treaties with Singapore. So what I'm trying to say is the national government has created an environment of developing within India. For example, the production linked incentive. If we have to make chips in a country, and a chip is something which is very critical in sort of any of the products that you have, and therefore we must start making them in India, so the government will cover the gap. That's right. So policies like that have come in, which have helped the states. So if any business has to come within the country, it has to place its feet in a state, finally. And therefore the states become very important. And our state, under the leadership of Bhajan Lal ji, we have two very clear policies. One is, it should be easy to do business in Rajasthan, and I'll give you examples for that as well. The second is, we must bring down the cost of doing business in Rajasthan. Now, in terms of ease of business, we have created about 9 new policies. When I say new policies, you'll be surprised that those policies did not even exist in Rajasthan before our government came in. And for some very critical areas, for example, export promotion policy. Now, Rajasthan has been exporting things for decades, but we didn't have an export promotion policy. We have logistics policy. We have garments and apparel policy. We have cluster development policy. We have one district, one product policy. So we have data center policy, AI policy. We are coming up with an AI policy. So we are coming up with all of these policies so that there's a clear directive what the government will do, what the government can give. Therefore, anyone who comes in doesn't have an ambiguity. That's right. So in terms of the, I could say a few more things. Sure, but I please. think we should I leave it for the next question? Probably you'll ask me. Yeah. So we are also hand-holding beyond Rising Rajasthan, where we did MOUs. We are hand-holding the people who've done MOUs with us. So we are hiring consultants. We are paying the consultants. We're hiring them so that all the file movement will not be done by the entrepreneur. Will be done by the government of Rajasthan. Right? That's the service we are providing you. It's literally like a door-to-door service. You don't have to go anywhere. That's right. We have also created an IT structure where the single window clearance in today's technology should not be in offices. It needs to be on an IT structure.
That IT structure is visible to the chief minister, to the various ministers, including the person who's invested the money in. So he exactly knows where his file is. And it's highlighted anytime the file is taking too long. That's right. We are giving direct land allotment in terms of bringing the cost down of business. So ease of business I've already mentioned. In bringing cost of business down, the previous government was having a policy of auctioning of land. Now, auctioning of land creates revenue for the government, but it's a one-time revenue. There is no employment generation. The cost of land goes too high. It becomes real estate. And there's no manufacturing that happens thereafter. So it goes into a real estate. So how does it help a young Rajasthani? It doesn't. We don't create economic vibrancy. So we've come up with this direct land allotment. Okay. And also the Rajasthan Investment Promotion Scheme, which is RIPS 24. I must make a mention here that mere sloganeering is not enough. If a government means business, it has to walk the talk. What you say, you have to deliver. The previous government created RIPS 19, RIPS 22, but did not give a single incentive which was actually meant in it. In the first year itself, AK, we've given 1,000 crores as incentives to the industry already. And it's just the beginning right now. 2,300 companies have benefited from our RIPS 24. We've already given the money. So you have to walk the talk. You have to support the industry. We want to do this to create employment in Rajasthan right now. We cannot wait for tomorrow. We're also giving land which is underdeveloped. You know, previously there was this notion that RICO needs to develop the land first. And it takes a year to develop a land. Why wait for that time? If an industry wants to do business today, we need employment today. That's right. Let them develop it themselves. We'll just reduce the cost of the land. So variety of things we've done for ease of business, for reducing the cost of business, and it's overall in the direction of the Prime Minister where he says, reform, perform and transform. And transform. So we are reforming, our government is performing, and we are transforming Rajasthan from a 15 lakh crore economy to a 30 lakh plus crore economy in next 3.5 years. Fantastic. Just wanted one clarification by way of supplementary. When you said you're not going in for auction, what is the process you're following for allotting the land? Yes, so it's a direct land allotment. You do an MOU, you go to our website and you choose the plot. All the industrial plots are on the RICO website. Oh, it is entire thing is IT. We have 419 plus RICO parks in Rajasthan. Each and every park is visible on their website. You want a corner plot or you want a middle plot, it's all there. It's all visible. You just have to point it and sort of say that I need this plot. And we have a system of price fixation. On the basis of price fixation, we will allot you that plot directly, but we have a condition. You cannot hold on to that plot if you do not start your production within the first 3 years. Okay. So that's a condition because the land belongs to people of Rajasthan. We can't have anyone holding on to it and not doing business there. Of course, we assess whether the person doing business is a real business, is a serious businessman. Has he done business elsewhere? Does he have the capability of doing business? Does he have the technology? Is that product viable here? All of these research we do, and then we allot the land directly. To the MSME sector, AK, we've created a system of lottery because there are a very large number of people who are looking for land, and we want to give them land at a fixed price. So how do you do it if there are more number of people looking for the same number of plots? So we've done a lottery system, but not auctioning. It's a direct land allotment. Okay. And how linked this price fixation is to the market? I mean, when the committee of your government actually decides on the prices, is it done through a market-linked policy or is it done through a kind of a committee-based? I mean, because pricing land has been very, very difficult, and as you rightly pointed out, natural resources, if they are auctioned,
is good revenue for the government, but may not be very good deal for the consumers and the people who want to set up businesses. So how do you go about it? So businessmen want clarity. Businessmen don't want ambiguity. That's right. And businessmen want speed. They want it done immediately. Price is not that much a relevance for them as a waiting period of 6 months. When you go into an auction, you have to wait for 6 months. That's right. And then somebody jumps in and artificially escalates the price. That part they are not comfortable with. So all of that is done away by fixed pricing. Okay. Second is, we go by the price which was the highest price of last year. Okay, there is a linkage. Yeah. And then how far it is from the city. If it is farther away from the city, then we reduce the price. Right? So we have a system and we have a committee that decides. The price is fixed. And it's for that industrial area, it's the same price. And is that formula transparent? Everybody can see that formula? Yes. So we have a policy wherein says that since the auctions were happening till the last year, so whatever price was at that auction, we take that price as a fixed price. Okay. Right? Okay. And so we are not going below that price, but then we also consider the new industrial areas that are coming up farther away from the city. Then we accordingly reduce the price, but that's by a committee. And that's common to all the people who are applying in that industrial area. That's right. You know, I mean, let me share this incident that happened. Yesterday we had the privilege of calling on the minister to, formally invite him for today's function. So we went to his office. It was a simple office, but on the ground floor there was something called a single window clearance. So it was closed. So we were a little puzzled. So, and as curious journalists, we asked the minister that, why is that thing closed? And he actually revealed to us yesterday that what that single window clearance has been replaced by, and which is completely a dashboard principle, which you just now referred to. So I think if Rajasthan is moving on this path, and Rajasthan is probably the first state which got into something called a Bhamashah card. You will remember. That is the first state to have got an identity-based, cash transfer system much before Aadhaar came into this country. So I think Rajasthan has been in the forefront of many things. So I come to the next issue about. The Prime Minister has talked about a major internship scheme of improving skills and making sure that the youth of this country, actually gets trained by the corporate sector, by the companies, and they become useful for further employment. And you also in charge of a ministry which is called Youth and Sports. So how do you see that internship scheme panning out? Or do you have any plans to integrate the youth of your state to this employment market? Your thoughts on that would be very useful for our readers and audience here. So एक आजकल ये reels बहुत popular हो रही हैं ना. So अभी मैं एक reel देख रहा था, उसमें किसी ने प्रश्न पूछा कि राजस्थान शब्द लेते ही आपके ध्यान में क्या आता है? उन्होंने बोला सैंड ड्यून्स आते हैं, डेजर्ट आता है, ऊंट आते हैं. मुझे लगता है कुछ सालों के बाद में अगर कोई किसी से प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान शब्द सुनते ही क्या आता है, तो उनको आएगा यहाँ पर स्टार्टअप्स, सक्सेस स्टोरीज एंड इनोवेशन. यहाँ पर होगा इंडस्ट्रीज. एंड आईटी इज अ वेरी बिग प्लेयर दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग सेक्टर फॉर राजस्थान. हैदराबाद, बेंगलोर के अंदर जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें से बहुत से लोग राजस्थानी हैं. हमारी प्रॉक्सिमिटी दिल्ली से बहुत शानदार है. गुड़गांव जितना डेवलप होना था हो गया, उससे ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता. और गुड़गांव की जो प्लानिंग हुई थी वो 15 साल पुरानी थी. That's right. 1 घंटा दूर दिल्ली से आप जब निकलते हैं एक्सप्रेसवे पे, वहाँ से राजस्थान शुरू हो जाता है. सो हमारा विजन है एक आईटी सिटी
और वो भी ऐसा जो अगले 20 वर्ष की प्लानिंग से बने वहाँ पर. सो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ स्कोप फॉर राजस्थान. आपने जो बात करी कि अभी जो नई योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसकी घोषणा करी लाल किले से, जहाँ पर 15,000 रुपये उसको पहले जॉब पे मिलेगा, राजस्थान के नौजवान उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं. स्किलिंग इंडस्ट्री से हम लगातार कनेक्ट कर रहे हैं. बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर स्किलिंग ज़रूर हो. जैसे यहाँ पर स्टोन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो स्टोन की पॉलिशिंग, स्टोन मशीन्स की अपकीप, मेंटेनेंस, स्टोन्स की मार्केटिंग, ई कॉमर्स, उसके ऊपर स्किलिंग होनी चाहिए और हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं. उसी तरह हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है राजस्थान के अंदर, तो हॉस्पिटैलिटी के ऊपर फोकस्ड स्किलिंग हो. उसी तरह एपरल्स, गारमेंट्स, ये स्किल्स एंड एजुकेशन इन इटसेल्फ इज अ बिग प्लेयर. यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर. तो हर तरह से एजुकेशन एंड स्किल सेक्टर्स आर देयर. सो दिस स्कीम जो विच प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड is a major incentive for youth, and Rajasthan will play a very big role in the coming years for that. Okay, wonderful. There's the new, the global scenario being what it is, with Mr. Trump imposing tariffs after tariffs. India's Prime Minister has talked about Swadeshi and Atmanirbharata. Whichever way you take it, how do you think Rajasthan is looking at Swadeshi in a different context, in the current context, and Atmanirbharata as a strategy for taking Rajasthan's industries forward? देखिए, कुछ समय पहले तक एक देश की ताकत आंकी जाती थी जियोपॉलिटिक्स की वजह से. मुझे लगता है आज के युग के अंदर एक देश की ताकत आंकी जाएगी जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर. युद्ध करने के अलग अलग तरीके होते हैं. माफ कीजिए मैं शब्द युद्ध इस्तेमाल कर रहा हूँ. आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनी लीडर ऑफ एनी नेशन, लेकिन ये सत्य है और शायद इसमें कुछ गलत भी नहीं है. हर देश ये चाहता है कि उसकी ताकत बढ़े. पहले जमीन को हत्याकर ताकत बढ़ाई जाती थी, आजकल जमीन को हत्याने की जरूरत नहीं है. अगर इतना बड़ा देश 140 करोड़ का दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर हो जाए तो क्या वो गुलामी नहीं होगी? तुरंत नहीं होगी तो 15-20 साल बाद जरूर हो जाएगी. अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, डिफेंस आर्मामेंट के लिए अगर दूसरे देशों पर निर्भर हो जाते हैं, एज सिंपल एज अ जियो पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, तो उनको तो एक चाबी से उसको स्विच ऑफ ही करना है और आपकी सेना भूल जाएगी कि जाना किस तरफ है. लोकेशन आपके हवाई जहाज नहीं उड़ पाएंगे. सो इन सभी चीजों के लिए, या वो देश की सुरक्षा का मामला हो या आईटी का हो, जहां पर एक एक बारीक चीज भी दूसरा देश आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है. अब वो जमाने चले गए जहां सरहद के ऊपर आपके सैनिक खड़े होते थे और दुश्मन को वहीं रोक लेते थे. आजकल वो हवा में जो तरंगे चलती हैं वो आपके बेडरूम तक नहीं, आपके बाथरूम तक पहुंचती है. और कहां किसका माइंड सबोटाज करा जा रहा है, उसको उसके माइंड के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है, पता भी नहीं चलेगा. सबकॉन्शियस में होने लगेगा और धीरे धीरे कॉन्शियस में आ जाएगा. आप देश विरोधी बातें करने लगने लग जाएंगे और विश्वास करने लग जाएंगे उन बातों के ऊपर. सो इन सभी के लिए, चाहे वो आईटी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे एग्रो प्रोडक्ट्स हो, चाहे एनर्जी हो, हमें हर तरह से आत्मनिर्भर बनना है. That's right. सो इसी के दिशा में ये पूरा काम हो रहा है और निश्चित रूप से राजस्थान उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. आपके 56 मिनरल्स राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं और उनमें से कुछ एक, जैसे जिंक के अंदर तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं. लैंड की कोई कमी नहीं है राजस्थान में. ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है विद द एक्सप्रेसवेज कमिंग इन एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कमिंग इन. अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो मेहनती युवा हैं उनकी कोई कमी नहीं है. मार्केट की कमी नहीं है, तो किसी चीज की कमी नहीं है. और इसीलिए
राजस्थान देश के डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और उसमें महत्वपूर्ण है कि लीडरशिप सही निर्णय लें और सही दिशा में लगे, और हमारे को मदद भी चाहिए, केवल गलतियां नहीं, सुझाव भी। अगर मीडिया है, बिजनेस स्टैंडर्ड इज कमिंग इनटू राजस्थान, बिजनेस के अंदर, बिजनेस की इंफॉर्मेशन के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है बिजनेस स्टैंडर्ड का, तो केवल खामियां ही नहीं, विशेषज्ञों से सुझाव भी आने चाहिए। केवल लॉन्चिंग पे ही नहीं बैठक हो, साल में अलग अलग बार भी बैठकें होनी चाहिए, और विशेषज्ञों के साथ काम करना बहुत जरूरी है। वी आर इन द पोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिंग, वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स, वी नीड टू स्पीक टू द एक्सपर्ट्स रेगुलरली। तो आपने जो बात कही उससे मुझे थोड़ी बहुत मतलब करेज मिल रहा है मुझे एक सवाल करने का कि और उसके साथ जुड़ा हुआ भी है कि क्या चुनौतियां हैं राजस्थान के जो सपनों को साकार करने के लिए? चुनौती, एक दो तीन चुनौती को आप अंडरलाइन करें जिससे कि लोग भी इसमें उनको अगवा हो जाए और वो जानने क्या करना पड़ेगा और क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कोई ऐसा कोई आपका असेसमेंट है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। चुनौतियों को हमने 2023 में पार कर लिया। जब 2023 में चुनाव हुआ उसके बाद वो चुनौती खत्म हो गई और अब एक संभावना आई है। राजस्थान संभावनाओं की खान है। इट इज अ गोल्ड माइन ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड लाइक आई सेड, when there's typically in the political language that the double engine government, so you have the right support from government of India, then there is nothing stopping Rajasthan to achieve its goal. और मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, जो पहले उदाहरण दिया उसके अलावा देता हूं। राजस्थान के अंदर जो बारिशों का पानी आता है, अनाप शनाप पानी होता है, जहां पीने का पानी नहीं होता वहां बाढ़ आ जाती है, तो वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है। और वाटर मैनेजमेंट के अंदर केंद्र सरकार के जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है हमारा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब जिस क्षेत्र में आप सब यहां बैठे हुए हैं, जयपुर के आसपास, यहां पानी की कोई कमी नहीं होने वाली। बीसलपुर बांध है, ईसरदा बांध बन गया है, ईसरदा बांध से अब एक कैनाल बनाई जा रही है जो जमवा रामगढ़ बांध में आ रही है। आपको अगर याद हो, 1982 एशियन गेम्स के अंदर रामगढ़ बांध में रोइंग के कॉम्पिटिशन्स हुए थे। पिछले 10 साल से रामगढ़ बांध सूखा पड़ा हुआ है। जहां रोइंग के कॉम्पिटिशन्स हुए थे वो पिछले 10 साल से सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन अगले 2 बरस के अंदर अंदर ईसरदा में जो पानी भरेगा उसका जो ओवरफ्लो होगा, और इतना ओवरफ्लो होता है कि उससे 3-4 बांध भर जाए, वहां से जो कैनाल आ रही है जो अगले 2 साल में बन जाएगी, वो पानी रामगढ़ बांध में आएगा। रामगढ़ बांध जब भरेगा तो उसका पानी कालक बांध में जाएगा। दिस वाटर मैनेजमेंट इज ओनली पॉसिबल when both the governments are working in sync with each other, and that is what is happening right now. This is just one example, but मुझे लगता है कि चुनौतियों पर ज्यादा फोकस ना करते हुए संभावनाओं पर फोकस करना चाहिए, और निश्चित रूप से सरकारों की जिम्मेदारी होती है चुनौतियों को पार करना। और मैं एक बार फिर कहता हूं, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, सरकार वो नहीं होती जो कानूनों के पीछे चलती है, सरकार वो होती है जिनके कानून पीछे चलते हैं। यानी मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि कानून ये है। अगर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है राजस्थान के लिए तो हमें कानून बदलना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट इज। दैट्स अ वंडरफुल रिस्पॉन्स मिस्टर, थैंक यू वेरी मच। I will come to your as stint as an Olympian sports person. You were India's first individual silver medal winner in Olympics. And you also happen to be the Minister for Sports in this government. And sporting infrastructure is good for both sports, is also as a very good opportunity for investments, creating infrastructure, connectivity. What kind of vision do you have for Rajasthan sports and it being taken to a new height? देखिए, अभी देश तैयारी कर रहा है 2036 ओलंपिक्स की, तो उसके लिए भी हमारे को अभी से तैयारी करनी ज़रूरी है। 1 दशक लगता है खिलाड़ी को तैयार करने में। केवल खिलाड़ी ही नहीं,
खेल का मैदान एक ऐसी जगह है जहां आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, अगर आपने खून पसीना खेल के मैदान में बहाया है तो आप हर क्षेत्र में एक अच्छे टीम के सदस्य, एक अच्छे लीडर की तरह काम कर सकते हैं। देखिए, खेल का मैदान एक बड़ी अनोखी जगह है। हमारे समाज के अंदर अलग अलग बाउंड्रीज बनी हुई हैं। कितना कोई कमाता है, कोई ज़्यादा, कोई कम, कोई किस समाज से आता है, कोई किस धर्म से आता है, अलग अलग बाउंड्रीज बनी हुई हैं। और यही कोशिश रहती है कि सब उसी बाउंड्री के अंदर रहें। जब हम खेल के मैदान के अंदर आते हैं तो जो खेल के मैदान की बाउंड्री होती है उसके अंदर प्रवेश करते ही बाकी समाज की बनाई हुई सारी बाउंड्रीज समाप्त हो जाती है। वंडरफुल, वंडरफुल। उस आधे घंटे के खेल के अंदर आप जीवन की कई चीजें सीख लेते हैं। हार हो गई तो हार से निराश नहीं होना, कल फिर है। अगर हार हुई तो उसको सबक सीखना कि कल मेरी जीत कैसे होगी। That's right. अगर जीत हुई है तो भी जमीन पे, धरातल पे ही रहना, नहीं तो कल हार होगी। किस तरह से जिस व्यक्ति की जो स्ट्रेंथ है उसको उस पोजीशन पे खिलाया जाए, उसका फायदा वहां पर उठाया जाए। लीडरशिप क्या होती है वो वहां पर सीखने को मिलती है। तो अनेकों चीजें खेल से सीखने को मिलती है। तो कहने का मतलब एक ही मेरा ये है कि जब हम खेल की बात करते हैं, युवा शक्ति की बात करते हैं, तो केवल हमें ओलंपिक का नहीं सोचना चाहिए, ये अंतर्राष्ट्रीय खेलों तक ही नहीं सोचना चाहिए। ये तो महत्वपूर्ण है ही। भारत का तिरंगा, भारत का झंडा किसी दूसरे देश पे लहराना और उस देश के लोगों को खड़ा होना, ये केवल खेलों में ही हो सकता है, जहां वो मन से खुश होकर खड़े होते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी संभावना यह है कि आपकी जो लाखों के जो युवा हैं वो शारीरिक रूप से मजबूत हों, वो मानसिक रूप से मजबूत हों, वो एक दूसरे से जुड़ें, वो खेल के मैदान में होता है। तो हमें दोनों को, हमें उस पर काम करना है। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं आपको, तो हम एक टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो 10 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए हम करेंगे राजस्थान के अंदर, जिसमें एजुकेशन विभाग को हम साथ में लेंगे क्योंकि बच्चे ज़्यादातर वहाँ होते हैं। और हम फिजिकल टैलेंट ढूंढेंगे, हम स्किल नहीं ढूंढेंगे, फिजिकल टैलेंट ढूंढेंगे, एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी। कारण क्या है उसका? आमतौर पे भारत के अंदर जो जूनियर लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भारतीय बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सीनियर्स में जाते हैं तो भारतीय जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है। उसका कारण यह है कि बचपन से हम स्किल को तवज्जो ज़्यादा देते हैं, लेकिन सीनियर्स में आते आते फिजिकल एबिलिटी और स्किल बराबर की अहमियत हो जाती है। अगर हम एक टैलेंट हंट करें और हम तलाशें, एक उदाहरण देता हूं बास्केटबॉल का या 100 मीटर्स का, हम तलाशें कि राजस्थान के अंदर कितने माता पिता हैं जो 6 फुट से ऊंचे हैं। उनका जो बच्चा या बच्ची होगी जो 10 साल की होगी, वो आप और मैं लिख के दे सकते हैं कि वो 6.5 फुट के होंगे। करेक्ट। उनको हम ढूंढना, उनमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन है या नहीं, उनकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ है या नहीं, फास्ट ट्विच मसल फाइबर है या नहीं, उसको तलाश करके हम आसानी से करीब 500 बच्चे ऐसे छांट सकते हैं जो 6.5 फुट के होंगे अभी से। उनको फिर 10 साल के लिए हम अच्छा न्यूट्रिशन दें, अच्छी ट्रेनिंग देंगे, तो निश्चित तौर पे 2036 में जब भारत में उम्मीद है ओलंपिक्स होगा, तो केवल हम मेजबानी ही नहीं करेंगे, हम वहां पर पदक भी जीतेंगे और राजस्थान उसमें बड़ा रोल प्ले करेगा। I think you gave a wonderful, redefinition of sporting infrastructure. I mean, this is something that जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात करी है कि ये हमारी सरकार, यहाँ पे भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारा ये विश्वास है, हर जगह क्या होता है, 100 करोड़ आपने दिए, सब सीधे बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं। करेक्ट। अरे बिल्डिंग बनाना तो सबसे आसान काम है, ठेका दे दो बिल्डिंग बन जाएगी। उस बिल्डिंग के अंदर जान कैसे फूकोगे, वो सबसे कठिन काम है, और असली पैसा वहां खर्च होना चाहिए। अब आईटी की भाषा में बोलूं, मैं यहाँ पे अजय जी बैठे हैं, तो हार्डवेयर के ऊपर ही खर्चा नहीं होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी खर्चा होना चाहिए। एंड सॉफ्टवेयर इज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब तक आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं करोगे तब तक आपके पदक नहीं आएंगे, बिल्डिंग पदक नहीं जीतेगी, वहां पे रहने वाला युवा खिलाड़ी ही पदक जीतेगा। I think, Mr. Minister, I think this discussion can go on and on and on because you have been so kind. But I have two, short questions.
One is which is, 10 years ago you had graced an occasion of Business Standard that was in Delhi. You came and gave away an award that Business Standard had instituted in the memory of a colleague who passed away unfortunately. And 10 years later you are here with us again. And so you were in a sense associated with Business Standard then and now. So what would be your message to Business Standard in communicating the developments of Rajasthan to its readers? That's number one. And number two is a personal question. How do you keep yourself fit even now? How do you keep yourself physically so fit even now, in spite of being so occupied with your political responsibilities? Yeah. The Business Standard has a very high reputation in terms of newspapers or a media house that writes about businesses, opportunities, challenges, new technologies, new opportunities coming in. So undoubtedly, it's an honor for Rajasthan, and I think it's a testimony of the work that we are doing that Business Standard has chosen to come into Rajasthan in Hindi and in English. So I'm grateful for that. I've also been, with the blessings of Prime Minister Modi, spent some time in Information and Broadcasting Ministry in the center. So I am very well aware of the capabilities and the potential of what media can do and what Business Standard can do for enhancing business in Rajasthan. And so therefore, my humble message, I'm no one to give a message to any media house, they don't like it. But since you've asked, my humble message to Business Standard is, come be a partner with the government of Rajasthan to convert our economy from 15 lakh crore to a 30 lakh crore economy in your first 3.5 years. We accept that. In terms of fitness, as soon as AK mentioned about my fitness, I inhaled my stomach and pulled in my stomach. No, I think it's just discipline, which the army has taught me from many years, what I've learned as a sportsman. And I believe that, I believe that this is my tool, that my body is my tool to carry out my mission. And therefore, whatever our mission is, we carry it out only with one tool, which is our body. So be it the mind or be it our shoulders, be it our hands, we need to have high amounts of energy to be able to accomplish that. So I think it's just a humble attempt. It's not easy with all the kachodis, lovely kachodis of Rajasthan, with all the bundi ka laddus in Rajasthan. I don't know if Mohan, have you had it? But you must have. You must take Mr. Dobal as well. Tomorrow morning, I think we should all go to the kachori place and have kota kachori or the jalebis of Rajasthan. Thank you very much. If in the next 5 minutes, if any question from the floor, we can take, the minister can take 1 or 2 questions maybe. So any question from the floor, please identify yourself, and if there is a specific question or an observation, please go ahead and Check. Hi sir, good evening, good morning. We are a telecom infrastructure company in Rajasthan, Jaipur. So, I mean, as you said, that there's an open window now being taken up, and you'll have consultants also helping businessmen, new businessmen here. So just one question, like in few past governments, there have lot been MOUs that have been done with the industry department as well as government of Rajasthan, and the conversion ratio was very less. So what do you have to say this time when so many MOUs have been done? What will be the conversion ratio this time, sir? Yeah, it's a good question. Thank you so much. That's where our effort has to be as government. We create ease of business, we bring the cost down, we have to do conversion. And we want to do conversion as soon as possible because, like I mentioned, we don't want employment generation tomorrow. We want it now. And so that's the reason we have created an IT structure for the investments that are coming in, so that each of the investment can be tracked. The Chief Minister takes meetings of investments above 1,000 crore. He does it every month.
The Chief Secretary of the state takes meetings every week for investments that are from 100 crore to 1000 crore. And my own department, the secretary there takes meetings of all investments below 100 crore every week. And I keep a track of all of these investments regularly. We also have a mobile application in which if you have done an MOU, you can track your MOU as to how soon will we bring it to the fruition. I must give you the figures right now, that having done 35 lakh crore worth of MOUs in the very first year, in the first 3 months, we grounded about 3 lakh crore worth of investments. Today, the investments are about 4 lakh 15,000 crores which have been brought to reality. And our effort is to convert the MOUs into real production, manufacturing, service sector, so that the employment generation is as soon as possible. Thank you so much. Any other final question? Yeah, please go ahead. Please identify yourself and then ask the question. Thank you. I'm the CEO of Rajasthan Solar Association. सर जैसा कि आपने कहा अभी आपने आईटी सिटी की बात करी और जैसे कि अभी डाटा सेंटर सिटीज़ की भी कई स्टेट्स में बात हो रही है, जैसा कि अभी आपने बोला कि 35 लाख करोड़ के एमओयूज़ हमारे फर्स्ट ईयर में हुए, बिल्कुल ठीक है सर ये, और इसमें से मोर देन 80% एमओयूज़ जो हैं वो सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर के हैं। सर मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्यों ना हम एक सोलर सिटी, एक रिन्यूएबल सिटी घोषित करें राजस्थान में, जो कि उस 28 लाख करोड़ के एमओयू जो कि सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर में हुए उसको लाने में बहुत मदद करेगा और राजस्थान के जो टारगेट्स हैं हमारे आने वाले 5 साल में उसको पूरा करने के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। प्लीज़ सर। सोलर सिटी आपने कहा, कंप्लीट रिन्यूएबल सिटी हम कर सकते हैं। सोलर सिटी जैसे कि सूरत में आज की तारीख में कम से कम 50 से ज़्यादा सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। राजस्थान में ऐसा नहीं है, तो हम एक ऐसा इन्वायरमेंट दें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आए, जिससे हमारा एम्पावरमेंट भी स्ट्रॉन्ग हो। 2 चीज़ें हैं इसमें। आपका अच्छा सुझाव है, उसके लिए धन्यवाद। एक तो JPMIA जो हमारा जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अंदर हमने एक अलग से इंडस्ट्रियल पार्क चयनित करा है ओनली फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग, राइट, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जो सोलर आपके पैनल्स बनते हैं उसके लिए शायद पानी की बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है सेल्स के लिए। हाँ, सेल्स के लिए। तो सेल्स के लिए अभी हमारे को जगह चयनित करनी है। अगर कहीं सूरत में संभव है, पानी वहाँ ज़्यादा है, तो सेल्स जहाँ पानी की ज़रूरत है वो हम ऐसी अगर जगह आइडेंटिफाई कर देंगे तो हम उसके लिए भी उसको खोल देंगे। बट निश्चित रूप से JPMI के अंदर हमने एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क केवल सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही रखा है। और जो सोलर प्लांट्स लगते हैं, पैनल्स जहाँ लगती हैं, वो तो राजस्थान और गुजरात के अंदर ही सबसे ज़्यादा लग सकती है। दुनिया का शायद या एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो राजस्थान के अंदर ही है। तो और उसकी बहुत आगे भी बहुत संभावना है। तो आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Minister, for, if there are no other questions, is there any other? Yeah, just please. There's the last question. Yeah. Please identify yourself and ask your question or shoot your question to the Minister. Yeah, thank you. मेरा नाम डॉक्टर तरुण कुमार टाक है। मैं राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान करके एक NGO भी चलाता हूँ और IT वॉइस के नाम से मेरा मीडिया हाउस है। एक तो धन्यवाद हमारे कर्नल साहब का जो IT मिनिस्टर भी हैं। सर आपसे सिर्फ 2 अनुरोध हैं कि राजस्थान में जितने ज़्यादा युवा होते हैं बिफोर ग्रेजुएशन वो राजस्थान में ही होते हैं, पर पढ़ने के बाद में यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन भी राजस्थान से ही होता है। IT के लिए जैसे गुजरात में गिट सिटी है या आपने हैदराबाद का बताया, पूना के अंदर मगरपट्टा है, गुड़गांव के ये है, राजस्थान में आप जो अभी बता रहे हैं कि IT सिटी आ रहा है, एक तो कहाँ पे आ रहा है? क्योंकि इससे पहले भी कई सरकारों ने IT के लिए टिन टावर बनाने के लिए 2-3 बार ट्राई भी किया। कंपनियां यहाँ आती है पर उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए अपन क्या कर पा रहे हैं? और अभी जो IT सिटी आप जो प्लान कर रहे हैं वो किस जगह कर रहे हैं? आपने वो ये जानकारी तो होगी ही कि IT सिटी की घोषणा बजट के अंदर हो गई है। तो वो एक पहला कदम है उस दिशा में जहाँ पर IT सिटी बनेगा। इट्स ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड इन द बजट। कहाँ बनेगा उसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। हमें एक बड़ी मात्रा में ज़मीन भी चाहिए और जो कुछ बड़ी IT कंपनीज़ हैं उनकी सहमति भी चाहिए कि वो वहाँ पर रहने को तैयार हो जाएं, काम करने को तैयार हो जाएं। जैसे कि आप समझते हैं
कि आईटी सिटी के लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दिन में काम करेंगे, शाम को उनको रहना भी है और एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो वो सभी, उसकी एक प्रॉक्सिमिटी भी चाहिए हमारे को कि नज़दीक काम जहाँ शुरू कर सके। तो इसलिए इसके ऊपर चर्चा चल रहा है कि कहाँ पर हम ये आईटी सिटी शुरू करेंगे। ज़मीनों की कमी है, जो सरकार की ज़मीन है, और ज़मीन को अब कहीं पर अधिग्रहण करना मुश्किल हो गया है पहले से। इसीलिए एक जो निर्णय हमने रीको के अंदर लिया है, वो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के अंदर रीको हर साल 400 करोड़ का टैक्स भरती थी। वी हैव डिसाइडेड दैट दिस इज मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। हमारे जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उनको और बेहतर करा जाए, वहाँ पे पैसा खर्च हो। और हमने रेवेन्यू विभाग को बता दिया है कि जितनी भी सरकार की ज़मीनें हैं सड़क के पास में या रेलवे ट्रैक के पास में, वो रीको खरीदना चाहता है, ताकि एक भविष्य के लिए एक बैंक बने ज़मीनों के लिए, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन राजस्थान के अंदर रुके नहीं। सो ज़मीन भी हो, सही जगह भी हो, वो आईटी सिटी के लिए तय होगा और इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। ये टैक्स की बात क्या, टैक्स क्यों भरते हैं? RICO is a public sector undertaking. So therefore they have to pay. Therefore they have to pay tax. If they don't spend, the money that they are earning has to be paid in tax, which means that they are not spending. We have to spend in the right way. The money earned is not for profits. The money earned by any PSU has to be used for the public as soon as possible. And therefore, if RICO has to utilize its money, its profits, it must invest into new land banks or into development of the already established industrial areas. And if they do so, they will not be taxed. If you're spending, Then naturally you get the deductions. Wonderful. I think we have come to this wonderful session thanks to the Honorable Minister, and it's my privilege and honor to once again propose a vote of thanks to the Minister for coming here and spending some time with us, releasing the first edition of Business Standard English and Hindi. Thank you once again for being here. We close this session at this point. Thank you. Want access to Business Standard's premium insights? Join our exclusive LinkedIn communities and connect with top voices in the BFSI space on topics that matter to you.